Give me a minute. So today we're going to talk about the spermatogenesis process, right? In the last class, we have already talked about that, where whatever the male reproductive organs are. Okay? So actually the male reproductive organs from where the sperm forms is the, what is that organ? That is testes, you know? And in the testes there are which type of cells? Sertoli cells are that helping cells. Which cells which are forming the sperm? Drum, primordial germ cells. After that, yes. So from that, and this is an extra storage of that sperm is occur in that epididymis. Last time का diagram याद है ना? So we have started from here. Seminiferous tubules. Okay? Seminiferous tubules, and this is the body of epididymis where the extra storage for the sperm. And the next, what was the total organ? And associated glands. So this thing we have already covered, right? Where is the testis structure? This is the testis structure, where actually the sperm formation occurs from the seminiferous tubules-like structure, where the primordial germ cells are there, and they get storage at the epididymis, and after they get transferred through this tube-like structure, right? And from here there is a this gland is called the seminal vesicle, and after that prostate gland and bulbourethral gland, and it ejects out from that common opening or the urethral opening. Okay? This is something we have covered. Spermatogenesis. Make the heading spermatogenesis. Ma'am, we started writing under this topic. We did till multiplication and meiotic phase actually. We started something. Sure. Okay, so multiplication or meiotic phase we have already started. Shali, did we make any heading? No, ma'am, the next, we haven't made any new heading after that. The last sentence we wrote is that these cells are undivided and have larger chromatin-rich nucleus, which forms large diploid round sperm mother cells. Okay, next write down. Each spermatogonial cells is around 12 picometer in diameter, is around 12 picometer in diameter, PICO, picometer in diameter, and has prominent nucleus,
prominent nucleus, full stop. Some spermatogonia acts as stem cells, ब्रैकेट में लिखो. टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, ब्रैकेट क्लोज, and undergoes dividing and adding new cells, by repetitive mitotic division. So forming spermatogenic lineage. So Good forming, morning, ma'am. good morning, Shivani. So forming spermatogenic lineage. First stop. But some spermatogonia lineage, they are continuously dividing, so they are forming that lineage, है ना? Full stop. But some spermatogonia moves and enter the growth phase and called type B spermatogonia. लिखो, ऐसे लिखो, spermatogonia. Growth phase is this. I'll explain that abhi. So spermatogonia is just formed from the PG cells, primordial germ cells. Okay. So when there's spermatogonia, that means PG cells are what? PG cells are normal. Abhi मैं पूरा process last में लिख पाऊंगी. That at what stage of the fetal it is going to be decide कि क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा. ठीक है. So PG cells के पास whatever the signaling start that it is going to be formed the oogonia or it is going to be formed the spermatogonia. ये start हो जाता है. ठीक है. And after that, because PG cell is common in both male and female. Okay. After that, spermatogonia bana. Okay. Spermatogonia, guys. Abhi bhi these are the two. It is just the signaling, which is just decided that normal cells, suppose that the normal cells हैं, that they are going to form the sperm or they are going to form that ova. ठीक है. अगर sperm बना रही है, तो इस cells को हम लोग क्या बोलेंगे? Then we call it spermatogonia. ठीक है. और अभी कुछ इसमें डिवीजन कुछ भी नहीं हुआ. अभी देयर इज नथिंग. इट इज जस्ट सिग्नलिंग. ओके. सो दीज आर आल्सो टू एंड डिप्लॉयड होती है. ऑल ऑफ आवर सेल्स आर डिप्लॉयड इन नेचर. ठीक है. डिप्लॉयड मींस पेयर फॉर्म में, है ना प्रणव? ठीक है. सो आफ्टर दैट स्पर्मेटोगोनिया स्टार्ट गोइंग इनटू द माइटोटिक डिवीजन, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज. जैसे कैसे कंसीडर करो इन मेल. ठीक है. अब there's a definite number of the PG cells, just random if I talk, मान लो 50 numbers है PG cells के. ठीक है. 50 numbers will be going to form the spermatogonia. ठीक है. But exactly क्या 50 number of sperms बनते हैं? No. Sperm form in that millions of number, right? ठीक है. So spermatogonia undergo into the mitotic division. Okay. And they form, इसको हटा दो, अच्छा रहने दो. And they form two types of spermatogonia. The one is type A and the another one is type B. अभी भी डिसाइड नहीं हुआ. ठीक है. जैसे कि सपोज दैट ऐसे कंसीडर करो कि अगर आपकी एल्बो की सेल्स इंजर्ड हो जाए या रप्चर हो जाए ड्यूरिंग एनी इंजरी, आपके एल्बो की सेल क्या हो जाएगी? रप्चर हो जाएगी. ठीक है. सो यहाँ की सेल आफ्टर दैट स्किन इज ऑल्सो अ सेल, राइट? सो आफ्टर दैट स्किन का कलर नॉर्मल हो जाता है ना? हो जाता है, राइट? श्रीराम नहीं होता है, हो जाता है. ठीक है. सो दैट स्किन सेल्स, द न्यू स्किन सेल्स आर फॉर्मिंग थ्रू द माइटोटिक डिवीजन, है ना? फ्रॉम द पेरेंटल सेल द न्यू सेल्स आर ओनली फॉर्मिंग थ्रू द डिवीजन होता है. आसपास की सेल डिवाइड करके उसको कवर कर देती है. ठीक है. माइटोटिक डिवीजन. अच्छा, दैट मीन्स
अभी बनेगा, अभी फर्स्ट स्टेज है बच्चा, अभी 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 शुरू से शुरू कर रहे ना, अभी कुछ भी आगे नहीं है, अभी तक समझ आ रहा है। अभी अभी आगे जाएंगे तब 2n से n वाला कॉन्सेप्ट ना, अभी नहीं है, अभी तो हम जस्ट स्टार्टिंग, वेरी बेसिक स्टार्ट कर, ठीक है। सो दैट मींस कैन बी से सपोज दैट इस पूरे एरिया में मान लो थाउजेंड्स ऑफ सेल्स थी, ठीक है, मान लो यहाँ से 200 सेल्स इंजर्ड हो गई ड्यूरिंग दैट एनी इंजरी, वो डेड हो गई। सो आसपास की सेल्स अभी कितनी बची, 800, है ना। नाउ आफ्टर द सेल डिवीजन दे अगेन बिकम 1000, राइट, दैट इज माइटोटिक डिवीजन। ओके फाइन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, दैट प्राइमोर्डियल स्पर्मेटोगोनिया इज अंडरगोइंग इनटू द डिवीजन, अंडरगोइंग इनटू द डिवीजन। सो ये 50 से कितनी बना रही है, 50 से सपोज दैट ये बना रही है 5000, हाँ पेरेंटल सेल से बनेगी ना, हाँ हाँ सेम ही तो बनती है, नया जो स्किन बनती है दैट्स सेम ओनली, राइट, दैट्स अ माइटोटिक डिवीजन। द न्यू सेल्स और द डॉटर सेल इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट सेल, दैट इज माइटोटिक डिवीजन। अगर 60 कैसे बोलेंगे एग्जैक्ट कॉपी, अगर उसमें क्या कहते हैं 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो उसमें भी 46 ही तो रहेंगे, ऐसा तो नहीं है कि न्यू आरबीसी बनेगी इसमें हाफ हो जाएंगे। अभी उधर मत जाओ, अभी डिवीजन में नहीं जा रहा है, अभी सिंपल प्रोसेस समझो, ठीक है। हेलो, ठीक है। अब इन्होंने डिवीजन करा, सो दे फॉर्म 800 से 1000, 1000 बन गया था, सो दे फॉर्म 50 से 5000, multiple division, they just going into division, and all of this type A and type B spermatogonia are your अभी भी 2n, ठीक है, अभी भी क्या है, ठीक है। even the type A can form the type B, they also can form type, सेम ही तो चल रहा है सब कुछ अभी, ठीक है। Type A can be functioning as a stem cells. What is the quality of the stem cells to form the similar type of or to have the regeneration capacity, ठीक है। तो type A can form their own type and type A can also form the type B, ठीक है, समझ आया। Spermatogonia is undergoing into which division, mitotic division. Mitotic division means they are just increasing their number. ऐसे कंसीडर करो, एक बार यहाँ पे नंबर डिसाइड हो जाएगा, अकॉर्डिंगली क्या बनेगा, अभी भी ये फीटस में चल रहा है, दिस स्टेज इज अकरिंग इन द फीटस, आई टेल यू, अभी मैं डिक्टेट करूंगी उसको, ठीक है। तो दैट मींस पहले ही बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे कि दिस नंबर ऑफ स्पर्म इज गोइंग टू बी फॉर्म इन द फ्यूचर, ठीक है। अब जो टाइप बी ऑफ स्पर्मेटोगोनिया है ये आपकी जाएंगी ग्रोथ फेज में। अब अभी यहाँ पे क्या है, ये 2n, अब 2n से दैट मींस अभी भी सपोज दैट दिस इज द टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, इसके पास ये है 44 प्लस XY, है ना, दैट इज 2n, डिप्लॉयड चल रहा है ना अभी भी इधर इट नॉट X इधर नॉट Y, यस बिहेव लाइक दिस स्टेम सेल्स, इंजरी हो गई स्टेम सेल्स की बच्चा, स्टेम सेल्स, हाँ तो वो भी दैट इज व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेम सेल्स ना बच्चा, वी टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम, नहीं जमशेद पिटाई पड़ जाएगी बहुत ही तेज। पीजी सेल्स आर स्पेसिफिकली फॉर द गोनाडल फॉर्मेशन ना, तो उनको उसी में लिमिट रखो ना। स्टेम सेल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, योर आरबीसी जहां से बन रही है दैट हेमाटिक पोटिक सेल, हीमोपोटिक सेल, दैट आर आल्सो स्टेम सेल्स। क्या क्वेश्चन है, पीजी सेल्स यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे कैसे बन रहा है, हाँ ले जाइए। क्या हो गया, कोई आया है, हाँ बताओ पीजी सेल्स क्या, हम्म, हाँ 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 हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि पीजी सेल टाइप ए बना रहा है तो इसमें आप बोल रहे हो तो स्टेम सेल मतलब रिपेयरिंग, वो अपने नहीं रिपेयरिंग में नहीं कह रही हो, नहीं जमशेद मैं सिंपल इतना कह रही हूँ, सिंपली सेइंग दैट पीजी सेल्स आर दैट काइंड ऑफ सेल, जैसे स्टेम सेल्स, अगर स्किन सेल वहां की रप्चर हो गई है तो व्हेन इट इज गोइंग इनटू द माइटोटिक डिवीजन
इट विल फॉर्म ओनली द स्किन सेल ना, यहाँ से एक नया लिम्ब तो निकलने के नहीं आएगा. दैट्स द स्पेसिफिसिटी ऑफ द स्किन सेल्स. So PG cells are specifically forming the gonadal cells. PG cells are also stem cells. नहीं, काम क्यों नहीं रहता है? नंबर बढ़ा रही है भाई. PG cells forming the PG cells डिवीजन कर रही है. देखो ऐसे कंसीडर करो, एक पेड़ है, ठीक है, उसने क्या किया, फ्रूट्स दिए, ठीक है, कुछ फ्रूट्स आपने रख लिए. ऐसा होता है अगर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड समझ रहे हो. सपोज दैट किसी फार्मिंग ने क्रॉप लगाई, ठीक है, तो उसमें बहुत एक बोरी सपोज दैट एक टन ऑफ गेहूं उसने करे, वीट ग्रो करा, ठीक है, इसमें से कुछ वीट बना, तो ये भी वीट से ही है ना बच्चा. दिस इज ऑल्सो ग्रोन फ्रॉम द वीट सीड, ठीक है. अब वीट दो टाइप उसने डिफरेंशिएट कर लिए, टाइप ए वीट एंड टाइप बी वीट, ठीक है. टाइप बी वीट को उसने अब बने तो सेम ही टाइप के. दिस इज अ प्राइमोर्डियल जर्म सेल, दिस इज स्पर्मेटोगोनिया, दिस इज फॉर्मिंग टाइप ए. उसने रख लिए फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, उसको दोबारा वो सो करेगा इन दैट क्रॉप, ठीक है. और इसको उसने कर दिया कंजम्पशन के लिए, पीस दिया उसको, एंड उसने उसका फॉर्मेशन कर लिया आटा. दैट्स इट. इतना ही सिंपल प्रोसेस है. कुछ सेल्स को उसने रख लिया दोबारा बनाने के लिए, while कुछ सेल को उसने रख लिया कंजम्पशन के लिए, एंड these cells are going into the next stage that is called the growth phase. क्या डिफिकल्ट है? उसने कुछ सेल्स अलग कर दिए. पीजी सेल्स आर इन दैट बच्चा फीटल स्टेज ना. पीजी सेल्स आर द डिटरमाइनिंग सेल्स, वो उसी स्टेज में डिटरमाइन होंगे, उनके लिमिटेड नंबर होंगे. इन द एज ऑफ 14 और 15 देयर विल बी नो पीजी सेल्स, है ना. नाउ दिस इज स्पर्मेटोगोनिया, so that for the next generation, that is a type A spermatogonia, which is continuously forming the more sperm in that throughout the generation, throughout the life. That's a simple example. Got it? Shriram, I'm not getting. Pranav, did you get it? हाँ. Yes, we'll abhi the next stage we are going to talk growth phase. That's it. Pranav, did you get it? Simple. आपने फर्स्ट टाइम पे जो ये आपने सपोज दैट अभी आप लोग एग्रीकल्चर नहीं करो, सपोज दैट एनी पर्सन स्टार्ट गोइंग फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, है ना, ये हम लोग करेंगे. we'll do that kind of concept in the culture. Suppose that I have started the fish culture or sericulture. First time पे when I have to start, I have to pick some of the seed, right? So these are the seed. दोबारा पीजी सेल्स बनाओगे क्या? ये fetal stage में है. पीजी सेल्स आर द fetal stage. In that adult body, there is not forming that from here only. They are forming from here only. Yes, type A से the more. Suppose that ये वाला type B, ये वाला तो खत्म हो गया ना. This wheat is consumed. Now the more sperm is going to form. Where you are going to form that? Tell me. Exactly. Type A यही तो लिखा है मैंने. Type A is a functioning as a stem cell. They are forming. They will go under more. अब type A further बनाएगा type A and then type B. आपने दोबारा इतने वीट से फिर से बनाया. अब आपने टाइप पे कंज्यूम कर लिया, टाइप बी को फिर से आपने ग्रोथ फेज में भेज दिया. अभी इजी है. श्याम, प्रणव, you are continuously keeping some amount of for the next sowing the seed. That's it. इधर दिमाग क्या कर रही है? नहीं, पीजी सेल्स इन द फीटल स्टेज. वही तो मैं कह रही हूँ. लेट मी फिनिश, है ना. मैं स्टेज बताऊंगी भी कि फीटल में 3rd से 4th वीक में ये बन रहा है. आई विल टेल दैट. ओके, गॉट इट. चलो राइट डाउन. क्या लिखा लास्ट लाइन? ठीक है, नेक्स्ट लिखो ऐसे करके. स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया 2n. इसमें पॉइंट लिखो डायरेक्ट. यही वाला लिखना था. 4 to 7 generations. 4 to 7 generations are formed by mitosis.
are formed by mitosis. Spermatogonia A are initially formed. अगर आपने सारा 1 टन ऑफ का जो बोरी आपने गेहूं रखा है आपने सारा कंज्यूम कर लिया तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए फिर से प्रॉब्लम होगी ना. So that is a type A. ये लिख रहा है right now. Spermatogonia A are initially formed. While spermatogonia type B divide further. ये पॉइंट फॉर्म में लिखना जो मैं बता रही हूँ. Divide further and undergo into the growth phase. To form primary spermatocytes. ठीक है. Now make the heading growth phase. अभी आ गई समझ. Now make the heading growth phase. Second stage. Growth phase. नहीं लिखा एनसीईआरटी में ये सब. टाइप ए टाइप बी नहीं मेंशन है. फिर क्यों लेने वाले थे. चलो राइट डाउन ग्रोथ फेज. यस. Yes. Like in one, like okay. So whenever we talk about the numbers of sperm, it is in a million, right? So how every single time millions of sperm is going to form? Every single time PG cells is on a fetal stage. That means you have certain kind of cells which are forming that sperms continuously, and these cells are calling the spermatogonia. Until the 12th PG cells is not even mentioned. जब तक अगर 12th क्लास से पढ़ोगे तो PG cells is not properly mentioned. PG cells is a core that is in a fetal stage for the continuous whole life. Like in the male, जैसे कि female में menopause और ये वाला concept होता है, but male में it's not like that concept. So throughout the life, when the more number of sperms are forming, it is forming from the type A spermatogonia. Suppose that ऐसे consider करूँ कि number of PG cells सिर्फ 50 थी, इसने बनाई almost 10,000 of spermatogonia. 10,000 of spermatogonia. ठीक है. 10,000 of spermatogonia में almost 8,000 या ऐसे कर लो 7,000 are forming the type A. ज्यादा आप फ्यूचर के लिए ज्यादा रखोगे ना, you cannot spend everything at that moment of time, and 3,000 are forming the type B. ठीक है. 3,000 will undergo into the meiotic stage and forming the finally sperm in one go. ठीक है. तुरंत. So they are forming the spermiotic phase and something like that. Suppose that first year of birth ऐसे consider करो. ठीक है. पहले साल में जो sperm formation हो रहा है वो किससे बन रहा है? Type B से. ठीक है. Now this 7,000 type A. ठीक है. Now this 7,000 type A will again undergo into the mitotic digit. अब ये 7,000 से तो पूरी लाइफ चलेगी नहीं, है ना, millions of बनने हैं. So now this again undergo into the 7,000 and then we're going to form maybe 20,000. In 20,000, some of them type A again form and some of them type B. ठीक है. Second year के लिए जो बन रहा है वो यहाँ से अब type B will again forming the sperm. ठीक है. और type A again forming that 20. आपके suppose that यहाँ पे 20,000 में 14,000 इधर चले गए और 6,000 इधर चले, तो ये 6,000 स्पर्म बना रहे हैं जो कि हर टाइम पे बॉडी से रिलीज हो जा रहा है. ठीक है. फिर दिस 14,000 जो बच्चे अब ये अगेन बनाएंगे सपोज दैट 40,000. पीजी सेल का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया ना. गेटिंग माय पॉइंट है ना. इजी है ना अभी. सो हमेशा टाइप अप, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग टाइप ए एज स्टेम सेल्स. So they have the capacity to form more number of cells by just differentiating into type A and type. That's it. अभी इजी है. ग्रोथ फेज. पूछो. टाइप ए अगर ऐसा डिवीजन हो रहा है माइटोटिक डिवीजन हो रहा है तो वो तो उससे
टाइप ए बना रहा है, हम्म टाइप ए से टाइप ए और टाइप बी बना रहा है, हम्म इसमें प्राइमरी और तो कोई रूल नहीं है। बच्चे, what is primordial germ cells? Jamshid, what is primordial germ cells? तो ऑलरेडी मुझे रहता है What is primordial germ cells? इस प्राइमरी सेल्स फॉर द It is a type of cells in simple. Primordial germ cells, when I have mentioned here, Jamshid, suppose that this is the PG cells. Bacha, this is in the fetus. It can form the sperm. It can form the ova. Adult body में ova बनेंगे मेल में? खत्म. End. Yes. PG cells is in the fetus only. In the fetus, it is going to decide that the male form or the female form. PG cells are the primary germodial cells, which is going. आपने करा है. You have covered that class of the genetics. आपने करी है ना genetics? I remember मैंने Saturday को ही वो class करी थी and मैंने बताया था what are the factors, क्योंकि आपके syllabus में है the sex determination of Drosophila and the human. So what are the factors for required for sex formation as a male? These are only deciding at this stage. यहाँ पे कुछ decide नहीं हो रहा है. Decide कहाँ पर हो रहा है? तो fetus में तो होगा ना वो. Primordial germ cells are not every stage. Whenever the numbers of sperm is forming, every single time primordial germ cells are not deciding. Male की body बना चुकी है. After that खत्म. Chapter इसका close. After that the type A spermatogonia. मैम Yes बच्चा. मैम तो फिर वो जो अमीनो सिंथेसिस होता है उसके अंदर जो हम फ्लूइड चेक करते हैं तो क्या उसके अंदर पीजी सेल को चेक किया जाता है? अमीनो सिंथेसिस किस स्टेज पे कितने उस पे चेक करते हैं? हम सेक्स डिटरमिनेशन के लिए हाँ, सेक्स डिटरमिनेशन के लिए किस मंथ में चेक करते हैं? डू यू नो ऑफ दैट? मैम आई थिंक आफ्टर 3 मंथ. After 3 months, right? So amino synthesis में actually we check the type of fluid. When the either the sperm is forming or the ova is forming, there is a specific type of chemicals body release. उसको check करते हैं. PG cells को निकाल थोड़ी सकते हैं. Cells नहीं check करते हैं. जैसे कि very simple concept, जैसे कि pregnancy के time पे है ना, वो जो किट्स आती है उसमें क्या check करते हैं? As the female body get pregnant, it start releasing a specific hormones, है ना? तो यहाँ पे भी specific यस मैम. फ्लूइड होते हैं, उसको जस्ट चेक करते हैं कि दिस फ्लूइड, इफ दिस, वो ऑलरेडी स्टडीड है कि दिस फ्लूइड अगर प्रेजेंट है तो मेल है, दिस फ्लूइड प्रेजेंट है तो फीमेल है. ठीक है? ओके मैम. पीजी से थोड़ी निकाल देंगे. चल, राइट डाउन. ग्रोथ फेज. आई वाज थिंकिंग कि oogenesis भी आज ही करेंगे. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय spermatocytes in which the diploid spermatogonium increases, in which the diploid spermatogonium increases its size about twice by accumulation of nutritive materials ब्रैकेट में लिखो, derived from the germinal cells and not synthesized, bracket close, in the cytoplasm and replication of DNA and forms diploid primary spermatocytes.
primary spermatocytes. Next, during this, the primary spermatocytes, during this, the primary spermatocytes prepare itself to enter into the next stage, or meiosis, or undergo maturation division, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो ग्रोथ फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. नहीं नॉर्मल पॉइंट है अंडर स्टार बना के. ग्रोथ फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस is of much shorter duration than that of oogenesis. ठीक है. थर्ड स्टेज लिखो मैचुरेशन और मियोटिक फेज. During this phase, the primary spermatocytes undergoes meiosis first. Underline that. Undergoes meiosis first. Okay. That means it is characterized by the meiotic division. ब्रैकेट में लिखो स्लैश रिडक्शनल डिवीजन. ब्रैकेट में स्लैश रिडक्शनल डिवीजन स्लैश heterotypical division. Bracket close. And give rise to 2 TWO. Give rise TO. ठीक है ना. ठीक है. अभी तक जितना समझ आया ग्रोथ फेज मैचुरेशन फेज तक तो समझ आया ना. इसके पहले वाला टाइप पे टाइप बी समझ आया ना. प्रणव से यस और नो. टाइप पे टाइप बी तक तो समझ आया ना. आफ्टर दैट आई एक्सप्लेन. अभी जस्ट लिख लो. ठीक है. अभी करेंगे. अभी लिखेंगे. हाँ दैट्स गुड. प्रणव व्हाट हैपेंड. आई एम नॉट सेइंग समथिंग. चलो नेक्स्ट. It is immediately followed by next point में लिखेंगे. It is immediately followed by
meiosis second. It is immediately followed by meiosis second. Meiosis second. ब्रैकेट में लिखो इक्वेशनल, ब्रैकेट में इक्वेशनल स्लैश होमोटिपिकल डिवीजन, स्लैश homotypical division. Bracket close. In each secondary spermatocytes, in each secondary spermatocytes, to form two haploid, to form two haploid spermatids, spermatids, to form spermatids, each of having hello मुझे बता दीजिए 23 number of chromosomes. 23 number of chromosomes. Full stop. Full stop. Next point. So each diploid spermatogonium. Next point, bacha. So each diploid spermatogonium produces 4 haploid spermatids. Produces 4 haploid spermatids. Full stop. Next point. Different stages of spermatogenesis are interconnected by cytoplasmic strands, 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 till spermiogenesis, when the maturing and interconnected gametes separate from each other. So when we have started the topic of spermatogenesis, okay, so the first heading what we have, actually this spermatogenesis is divided into mainly 2 phases. First, the formation of spermatids, and second, formation of sperm. Okay? Formation of spermatids is A and B. Then अभी तक finally spermatids final form हो गया, अभी just है ना last line में what we have said,
finally the spermatids had formed. देखो यहाँ पे हमने बनाया ना spermatids, ठीक है, underline that spermatid term, underline everyone that spermatid term. So what are the three phases in which we have written? The first is the multiplication phase. The first is a multiplication phase. The second is growth phase. The second is growth phase. The third is maturation or meiotic phase. क्या लिखा है ना अभी हमने? Everyone online? This is something we have written. Yes, ma'am. Right, Pranav? ये लिखा है ना ठीक. तो मतलब हमने फॉर्मेशन, ओके चलिए, मतलब वी हैव कंप्लीटेड दैट फॉर्मेट. अब समझ लेते हैं इसको, सीधे सीधे समझना, ठीक है. देखो, व्हाट इज दिस फेज? सपोज दैट दिस इज अ फीटस. सपोज दैट दिस इज अ, ठीक है, fetus has the primordial germ cells. Fetus has the primordial germ. ठीक है. In the fetus, fetus is your 2N zygote. That's 2N. All of the cells are 2N. That is ectoderm, mesoderm and endoderm वाला condition. एकदम start. ठीक है. Cross question नहीं करना जब तक I'm not going to complete the topic. Okay. So these are the primordial germ cells. Different types of cells are there in the fetus. Suppose that these are the skin cells, right? These are the heart cells. ठीक है. These are the digestive cells, right? So one type of cell is your PG cells. ठीक है. In the body, in that after the fertilization, all of the organs are forming from the different types of cells. Okay. PG cells have the deciding factor, signaling factor. है ना? They are, suppose that if we're talking about that, suppose that specific kind of signaling, one of the signaling is SXL gene. Okay, how we decide that X or Y? So XXL gene, if they are present, they are forming the Y chromosome. ठीक? अगर that XXL gene present होगी, which is coming from the father's Y chromosome, right? During the fertilization, that happens, no? These are the gametes. This is the mother, and this is the father, right? Father का अगर ये chromosome आया है, यहाँ ये क्या आपका zygote. So if this Y chromosome came, so इसकी जो PG cells होंगी उसको Y chromosome के सिग्नल मिलेंगे. What is chromosome? Chromosome is this. Is the DNA. DNA में अगर specific SXL gene होंगी, so इस zygote का और better से baby में क्या बनेगा? ये SXL gene. Okay. This SXL gene give the indication to the PG cells कि go and form the sperm. Easy है यहाँ तक? Relate हो रहा है? Okay, इसको हटा देते हैं, ठीक है? तो PG cells पे got the indication that you have to have formed the sperm because that is the male body, right? Because of the Y chromosome came from the father, not the X. Okay? Sure. Then in the PG cells, the signaling went and they just, suppose that number of the PG cells is the 50. Okay? Okay? They formed and every of the cells, skin cell, heart cells, okay, digestive cells, the complete is diploid. That is the diploid. So PG cells are also diploid, obviously, right? Okay. PG cells formed because of that signals form the spermatogonia. Spermatogonia. Still they are 2N and still they are 50 in number. They just give the signaling that sperm is going to be formed. अगर ये जीन यहाँ पे नहीं होता तो ये PG cells बना रही होती. Okay? That's. यहाँ तक easy है? मतलब हाँ बोलो because I'm just getting confused if by your expression. अभी तक easy है यहाँ तक? नहीं तो प्रणव ask me. I'm trying to explain in a very simple way. पक्का? So that is spermatogonia. अभी भी these are the same number. Now this spermatogonia, when I will concise it, यहाँ पर आपकी क्या है? ये spermatogonia ही है. समझ आया? Because these spermatogonia are going to form the spermatogenesis, that is sperm formation.
ठीक है, दैट मीन्स अब स्पर्मेटोगोनिया इज अंडरगोइंग द this spermatogonia are undergoing the mitotic division. Mitotic division. ठीक है, मान लो these are your 50 in number, 50 in number, 50 cells चाहिए, ठीक है. अब they went undergo multiple cut multiple mitotic division and they formed the spermatogonia. बस इसने डिवाइड किया, सेब को कट करोगे सेबी का पीस मिलेगा ना. ओके, सो यहाँ पे देयर इज स्टिल स्पर्मेटोगोनिया, दिस इज अंडरगोइंग टू द माइटोटिक डिवीजन. ठीक है, बहुत सारी स्पर्मेटिक डिवीजन. सम ऑफ देम फॉर्म द टाइप ए एज अ स्टोरेज. ठीक है, सम ऑफ देम अंडरगोइंग टू द टाइप बी. ठीक, that is your first stage. This stage is called the multiplication stage. Multiplication stage. Got it? Multiply कर गई ना? When you are multiplying something, the number is going to increase. So these are multiple in number. Suppose that these are, for the sake, if I say these are around 4000 in number. Just random numbers. These are just random numbers. ठीक है, आपने बस मल्टीप्लाई को कितना 80 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, 80 टाइम्स डिवीजन किया तो ये 4000 नंबर. टाइप ए जस्ट गेट फॉर द स्टोरेज, कि जब जरूरत पड़ेगी देन आई विल मेक अगेन, स्टोर्ड होगा. ठीक है, इनका सब कोरिलेशन, अभी इसको रख देते हैं. ठीक है, टाइप बी ने क्या किया, व्हाट द टाइप बी हैज डन. टाइप बी हैज डन, दे अंडरगोइंग टू द ग्रोथ फेज. मल्टीप्लाई तो कर लिया, नंबर इंक्रीज कर लिया. ठीक है, अब दे अंडरगोइंग इनटू द ग्रोथ फेज. ग्रोथ फेज में क्या होता है? नहीं बच्चा, ग्रोथ फेज में मेट्रिक डिवीजन नहीं होता है. देखो हमने क्या लिखा है ग्रोथ फेज में, these छोटू obviously when you are dividing that number, these छोटू become, अभी इतनी साइज की suppose that, है ना, these छोटू cells become enlarged. कहां से enlarged हो रही है? ग्रोथ हो रहा है ना, बॉडी में ग्रोथ हो रहा है. the cells become enlarged by taking the nutrition. ग्रोथ फेज में देखो हमने लिखा हुआ है न्यूट्रिशन, रीड दैट. सिर्फ ग्रोथ फेज पढ़ो फटाफट क्विकली. ठीक है, did I mention any type of division there? No. Okay, they are just taking the nutrition from the cells and they become bigger. That's it. Number are not increasing. Got it? Number increase नहीं हो रहे. छोटी cells थी, they become bigger. That's it. That's the growth. Okay? इसको हमने क्या बोला? Primary. These cells now not known as spermatogonia. Now these cells are known as primary spermatocytes. Got it? Enough. लिंक टूट रहा है? ठीक है, अब कौन कौन सी फेज हो गई? मल्टीप्लिकेशन फेज हो गई, ग्रोथ फेज हो गई. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज? दैट इज मैचुरेशन स्टेज. कहां पर? ग्रोथ फेज में. अब वो वाला स्टेज हम शुरू करेंगे तो G1, S, G2. हाँ, सेल डिवाइड नहीं होंगे बट डीएनए तो डिवाइड होगा ना. गुड, चलो देखो उसको भी रहने दो जमशेद, अभी इसको रहने दो. ठीक है, दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अभी भी क्या कैसी है? ये अभी भी ये 2n है. ठीक है, अभी भी these are 2n, जस्ट बड़ी तो हुई है, डिवाइड तो हुई नहीं, अभी these are also 2n. ठीक है, बट एक चीज हुआ यहाँ पे, whenever we form the chromosomes whenever we see in this stage or we see in this stage. इसमें देखते हैं और इसमें देखते हैं. नॉर्मल आपकी सेल्स में इसमें, जैसे कि सपोज दैट अभी मेरी स्किन इज नॉट डिवाइडिंग, है ना, अभी नॉर्मल है, तो हमारे क्रोमोसोम प्रेजेंटेड दिस फॉर्म. दिस इज आल्सो 2n and this is also
क्रोमोसोम के अंदर क्या है? डीएनए और क्रोमेटिड। अभी इसके पास कितने डीएनए हैं? क्रोमेटिड द 2। अभी इसके पास कितने हैं? राइट, हाँ 4C। द डीएनए अमाउंट गेट डबल। डीएनए बनता बिगड़ता रहता है आपकी बॉडी में एवरी सिंगल टाइम, बट क्रोमोसोम बनता बिगड़ता नहीं है। क्रोमोसोम इज सेट प्रॉपर, ठीक है। ये इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो सकता। जैसे कि सपोज दैट अगर इफ आई से कि आपकी बॉडी में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, so this 46 will remain all in the human species, ठीक है ना। सारे ह्यूमन में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना। अब वो इस फॉर्म में भी हो सकते हैं, अगर जरूरत सपोज दैट मेरी यहाँ की स्किन की सेल डिवाइड हो गई, रप्चर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियली जब जब सपोज दैट नॉर्मल थी, है ना, तो यहाँ पे जो मेरी सेल्स थी, तो इस सेल्स में क्रोमोसोम वाज लाइक दैट, ठीक, टोटल ऐसे प्रेजेंट है। अब सपोज दैट मेरी स्किन की सेल यहाँ पे रप्चर हो गई, ठीक है। सो अभी ये जो सेल्स ऐसे थे, अब इनको नया सेल्स बनाना है। When you have to form the new cells, the DNA will also be go there. DNA तो replication is very common. In that current moment of time I'm speaking, there's so many DNA just replicating, doing this because I require energy, I require the protein, है ना। अच्छा, तो जब ये डिवाइड होना था, तो ये डिवाइड होने से पहले इस स्टेज में आ गए। अभी भी 46 ही हैं क्रोमोसोम्स, और अभी भी 46 क्रोमोसोम्स ही हैं। Are we getting that? समझ आया? एक क्रोमोसोम ये होता है, इसको भी 1 क्रोमोसोम बोलेंगे, इसको भी 1 क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है प्रणव। बस इसमें क्या डबल चेंज हुआ है? डीएनए का कंटेंट, एंड दैट डज नॉट मैटर। डीएनए कंटेंट कैन इंक्रीज और डिक्रीज, डजंट मैटर, but chromosome number cannot increase or decrease. If the chromosome number increase or decrease, then it is called abnormality. Klinefelter syndrome, Turner syndrome, this and that. ठीक है, come again with this topic. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में अभी भी, अच्छा यहाँ पे जो बचा सेल्स थी ना, यहाँ पे मान लो ये सेल्स, इसमें ये वाला स्टेज था, ठीक है। इसमें कौन सा स्टेज आ गया? क्यों क्यों आ गया ये वाला स्टेज? क्योंकि इसको किस पे जाना है? इसको डिवीजन में जाना है। तो यहाँ पे जो न्यू सेल्स बनेंगी वो इसी से तो बनेंगी, राइट। तो नाउ द सेल बिकम लाइक दिस, ठीक है, बड़ी भी हो गई और डीएनए भी डबल हो गया। नेक्स्ट स्टेज का डीएनए बनाना है, ठीक है। नाउ द लास्ट स्टेज which is called maturation or meiotic phase, ठीक है। अब सपोज दैट 4 सेल्स मान लो, अगर मैं कंसीडर करूं, मान लो कंसीडर तो 4 सेल्स हो, है ना, थाउजेंड्स ऑफ मत रखो, जस्ट 4 सेल कंसीडर करो। अच्छा, दिस 4 सेल्स अब भी इस एक से 2 सेल बनेंगे, ठीक है, समझ आ गया? इसमें क्या होगा? इसमें कितने क्रोमोसोम है प्रणव? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर, वेरी गुड। इसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं? एक में बताओ, एक में, सिंगल में बताओ, सिंगल सेल में। हो गया हैप्लॉइड। इसकी कंडीशन कैन वी कॉल इट डिप्लॉइड, है ना। इसकी कंडीशन कैन वी कॉल इट हैप्लॉइड। गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स meiotic phase एंड खत्म, ठीक है। दैट इज meiotic phase 1, दैट इज meiotic phase 1। So that means अब सबको भूल जाओ, जस्ट कंसीडर दैट वन सेल, ठीक है। ये सब ऐसे ऐसे जा रहे हैं, सब में सेम ही प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। मान लो अगर इसको हम लोग कंसीडर करेंगे या इसको कंसीडर करेंगे,
तो इससे भी 2 सेल बने, ठीक है। अब नंबर ऑफ सेल्स नहीं काउंट करने, हमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड काउंट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या था, डिप्लॉइड था, इसमें क्या हो गया, हैप्लॉइड, बिकॉज ऑफ द मियोटिक फेज। और इसको हमने क्या बोला, व्हाट वी कॉल इट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, गेट इट। बट अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, बन गया आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, बट हमेशा जो पेरेंट स्टेज है वही स्टेज होनी चाहिए। अगर नॉर्मल अगर स्पर्म देखा जाएगा मान लो तो वो इस फॉर्म में रहता है, ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड, दिस इज ऑल्सो एन और दिस इज ऑल्सो एन, राइट। हमें चाहिए किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, है ना, इस फॉर्म में तो नहीं चाहिए ना हमें। तो अभी तक आया क्या इस फॉर्म में, नहीं आया ना, अभी इस फॉर्म में है, ठीक है। ना इसी मैचुरेशन फेज में ही देयर इज अ वन मोर डिवीजन, there is a one more division that is called, yes, exactly, that is called meiotic। अब इस स्टेज से क्या बन जाएगा, अब इसको कंसीडर करो, दिस सिंगल वन। अब इसमें हमें किससे चाहिए, इस स्टेज में चाहिए ना, तो इसमें हमें ऐसे कैसे मिलेगा, जब इसको हम 2 में बाद में अगेन डिवाइड कर देंगे, राइट, एक अलग और एक अलग। तो अब इस सिंगल से देखोगे बच्चों, तो नाउ वी आर गेटिंग हो गया, and these are called spermatids। what is called spermatids, easy था, है ना। इसको अगर बहुत शॉर्ट में समझने की अपन ट्राई करेंगे तो इट इज लाइक दिस, देखो अब सीधे सीधे स्पर्मेटोगोनिया से अगर समझो, तो स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पे थी, आपके पास कितनी भी स्पर्मेटोगोनिया थी, ठीक है, जो कि आपकी 2n थी, ठीक है। 2n से हमने क्या बनाया, ये हमारे पास नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, बनाया टाइप ए एंड टाइप बी, ठीक है। अब इजी से समझ लो, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टाइप बी अंडर गोइंग टू दैट फर्स्ट डिवीजन, दैट फर्स्ट डिवीजन इज, अभी तक सब कुछ हैप्लॉइड चल रहा है, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट डिवीजन को क्या बोलते हैं, मैचुरेशन, मल्टीप्लिकेशन यार, द फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इसने सिर्फ नंबर, सपोज दैट यहाँ पे 5 थे, यहाँ पे इसने 10 कर दिया, या 50 थे इसने 100 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी डिप्लॉयड है, यहाँ पे भी डिप्लॉयड है, ओके, दिस इज ऑल्सो डिप्लॉयड एंड दिस इज ऑल्सो डिप्लॉयड, फाइन, बात खत्म। नेक्स्ट इसने क्या किया, ग्रोथ फेज में गया, नेक्स्ट इट वेंट इनटू द ग्रोथ फेज, नंबर अभी चेंज नहीं होंगे, ग्रोथ में क्या किया, दिस छोटी छोटी सेल्स बिकम दिस इनलार्ज सेल्स, ठीक है। इसमें आपका ऐसे फॉर्म में था, सिंगल सिंगल डबल डबल डिप्लॉयड है, क्योंकि इसमें आपका ऐसे फॉर्म में हो गया, हाँ, न्यूट्रिशन लिया उसने और अपना कंटेंट डीएनए का डबल कर दिया, अभी भी ये 2n है। अब ये फर्दर गया किसमें, मियोटिक डिवीजन में, ठीक है। मियोटिक डिवीजन में अब नंबर पे हम बात नहीं करेंगे, अब सिंगल सेल पे बात करेंगे। इसमें से इसने हाफ कर दिया, तो एक सेल ये बनी, जस्ट इसको देखेंगे भी, यहां से शुरू करो काउंट, ठीक है, एक सेल ये बनी, एक सेल ये बनी, यहाँ पे इसमें 2n था, सपोज दैट 2 क्रोमोसोम से, यहाँ पे इसमें कितने कितने क्रोमोसोम बचे, nn, दैट इज मियोटिक फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे ये दोबारा गया किसमें, मियोटिक सेकेंड में, ठीक है। ये स्टेज से इसने अब सिंगल से इसने 2 बनाया, दिस एंड दिस, सो कैन वी कॉल इट फ्रॉम वन स्टेज, अगर इसी को कंटिन्यू करके चलो, 1 सेल्स लास्ट में जाके 4 सेल बना रही है, कैन वी कॉल इट
the one cell, look at that stage, look at suppose that single cell ग्रोथ फेज में गई, उसने अपना डीएनए कंटेंट डबल किया और ये सिंगल्स ने 2 बनाया मियोटिक फर्स्ट में, इसने एक ने फिर 2 बनाया मियोटिक सेकंड में, बट पेरेंटल सेल ये थी, तो अल्टीमेटली पेरेंट सेल से कितने टोटल नंबर ऑफ सेल बनी, दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी, स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म। ये आपका क्या बना अभी तक, स्पर्म मैट्रिक्स, ठीक है। अभी भी ये राउंडेड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। टोटल 4 स्पर्मेटिड्स एक से, तो सपोज 1000 अगर 1000 अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है तो कितनी बनेंगी, 4000, ठीक है। अगर 10,000 है तो 40,000, एक से 4 बन रही है लास्ट में, ठीक है। बट अभी सिर्फ स्पर्मेटिड्स बनी है, अभी स्पर्मेटिड करने के बाद द सेकंड, अब ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड खत्म हो गया और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म करना है। स्पर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे कि लास्ट में आपके पास ये एन स्पर्मेटिड बच रहा, अब इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर तक पहुंचने के मॉडिफिकेशन को हम बोलते हैं दिस इज द स्पर्मेटोजोआ, और बेटर से स्पर्म, और बेटर से स्पर्म सेम रहेगा, ये भी एन है ये भी एन है, इसका जो डीएनए इसमें सिर्फ एक ही है बट स्ट्रक्चर चेंज होगा, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटिड, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। समझ आ गया, व्हाट इज द सेकंड स्टेप वी आर गोइंग टू टॉक, ठीक है, चलो, हाँ, स्पर्मियोजेनेसिस, यस इट इज अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस, एग्जैक्टली। प्रणव नहीं आया, ऑनलाइन आ गया, वैशाली, Yes, अनुष्का, ma'am. शिवानी, Ma'am, just one thing. The multiplication phase starts from before forming type A or type B, or is it after? no, bacha, no, type B. Okay, Type okay. B is going to form. Type B is going to form the primary spermatocytes. ये लिखा है ना, Okay, ma'am. spermatocytes. Yes. Type A to just went somewhere for the further when Okay. the some formation required, then they form the type B again. अभी तक this is Okay, over. ma'am. Okay. ठीक है. हम चिदा गया. चलो. Next I don't. Formation of sperm. Slash spermiogenesis. Slash spermiogenesis. Right on. The transformation of a non-motile rounded, the transformation of non-motile rounded and haploid spermatid into a functional and motile rounded and haploid spermatid into a functional and motile spermatozoa is called spermiogenesis. As its functional form. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग फंक्शनल फॉर्म FORM फॉर्म। देखो, द मेन एम is to increase the sperm mortality. The main aim is to increase the sperm mortality by reducing the weight and the development of locomotory structure. Next point. It involves the following stages. It involves the following changes.
First point, nucleus become condensed. Nucleus become condensed, comma, narrow, narrow, and and anteriorly and anteriorly pointed, and anteriorly pointed due to the loss of materials, due to the loss of materials like nucleus, like nucleus, sorry, like nucleolus, not nucleus, nucleus nahi hai, like nucleolus, comma, RNAs, RNAs, and some proteins, RNAs and some proteins. Next, Golgi complex. Second point, the Golgi complex of spermatid. The Golgi complex of spermatid give rise to acrosome. Acrosome. Underline that. Acrosomal reaction आपने question है. Acrosome. 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 While the lost part of Golgi body, while the lost part of Golgi body is called Golgi rest. Is called Golgi rest. Ma'am, while the Lost part, LOST, lost part of the Golgi body is called Golgi rest. Next point. The two centriole, the ma'am, cold Golgi. rest, REST, rest. Next point. The two centrioles of the spermatids become arranged one after the other, become arranged one after the other. Just give me a minute, you know. One after the other behind the nucleus. One after the other behind the nucleus, and form the neck of the sperm, while the digital centriole, digital centriole give rise to exoneme, exoneme, thread-like structure. Nemata means thread-like structure. Exoneme. Next point. Mitochondria form a spiral ring. As get arranged in the middle piece around axial filament
around axial filament or digital and or around or digital centriole or digital centriole, full stop. This is called Nebenkern. This is called Nebenkern. This arrangement of the mitochondria. Nebenkern. Nebenkern. Next slide, point लिखो. Most of the cytoplasm is lost of spermatid and forms a thin layer around the middle piece as a sheath or tail of sperm Next point. एक अभी normal point नहीं है. These are the changes which we have covered. अभी normal point, normal line है. ठीक है, write down. The spermatid matures into spermatozoa. In deep folds of cytoplasm. Of the Sertoli cells or nurse cells, which also provide the nourishment to them. Full form. A typical mature mammalian sperm. Is flagellated consisting of four parts, namely head, neck, middle piece, and tail. Full stop. The human sperm was first seen. इसी में continue करना. The human sperm was first seen by Ham and Leeuwenhoek, by the scientist Ham and Leeuwenhoek, H-O-W-K, Leeuwenhoek. Full stop. Next point. Mature spermatozoa are released. In the lumen of seminiferous tubules. Called spermiation. Underline that. Spermiation. Underline that as permission. SPERMIATION. Full stop. Last point लिखो. The two testes of the young adult. Form around 120 million sperms each day. Form around 120 million sperm each day. देखो एक टेबुलर फॉर्म बनाओ. ठीक है,
फॉर्म अ टेबल, एक तरफ लिखो, बहुत छोटा सा होगा, एक तरफ लिखो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटिड, इसी का समरी है, इधर लिखो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटिड, और इधर लिखो चेंजेस इन द स्पर्म, चेंजेस इन द स्पर्म, ठीक है, टेबुलर फॉर्म होगा। इधर लिखो न्यूक्लियस, इस पे लिखो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस न्यूक्लियस बच्चा, न्यूक्लियस सिंपल, ठीक है। इस फॉर्म में लिखो उसमें shrinks and elongated, shrinks and elongated, इधर लिखो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, उसमें लिखो चेंज टू एक्रोसोम, चेंज टू एक्रोसोम, इधर लिखो डिजिटल सेंट्रियोल, डिजिटल सेंट्रियोल, उसमें लिखो फॉर्म्स, फॉर्म्स एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट ऑफ स्पर्म टेल, ऑफ स्पर्म टेल, टेल टेल, इधर लिखो माइटोकॉन्ड्रिया, इधर लिखो माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें लिखो फॉर्म, फॉर्म mitochondrial spiral of sheath, form mitochondrial spiral of sheath called Nebenkerm, called Nebenkerm, KERN, मुझे लिखा था NEBENKERN, इसमें लिखो साइटोप्लाज्म, लिखो साइटोप्लाज्म, उसमें लिखो जनरली लॉस्ट, मैम यस बच्चा, मैम एक बार स्पाइरल ऑफ के बाद से रिपीट कर देना। spiral of sheath called Nebenkerm, called Nebenkerm, लिखा था ना अभी, NEBENKERN, Nebenkerm। नेक्स्ट लिखो साइटोप्लाज्म, डन शिवानी, यस मैम। साइटोप्लाज्म, तो लिखो जनरली लॉस्ट, जनरली लॉस्ट except, except a thin sheet, except a thin sheet called thin sheet, sheet, sheet नहीं है, thin sheet called, called MANCHE, अच्छा just MANCH, MANCHE डबल टी, ठीक है, तो मेटाजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीटेड, इसका डायग्राम बना लो। whenever the question will come, you have to make this diagram, ठीक है।
तो मुझे पता था, Just FYI. आपने पहले अगर बना दिया तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड, टाइप ए टाइप बी, इट्स अ सिंपल स्पर्मेटोजेनेसिस. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स थोड़ी सी बड़ी बना देना, ठीक है. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एन है या 2n? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मैम एन है, 2n है, ग्रोथ है ना? फेज के बाद तो प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट बनेगा. हाँ ठीक है. नहीं एन है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एन है. हम्म. ये थोड़ा सा हो गया. एक मिनट.
ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट। ठीक है, जब भी एग्जाम में आपके स्पर्मेटोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट आएगा जस्ट सिंपली मेंशन। डन। तो ये टाइप भी वहां पे लिख लोगे तो वही हो जाएगा, अदरवाइज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स गोइंग इनटू दैट ग्रोथ फेज, है ना, वो बड़ी हो जा रही है और वहां पे डीएनए कंटेंट डबल हो जा रहा है। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपका एन हो जाता है। हाँ, इसके बाद स्पर्मेटेट्स आ जाता है। ठीक है, देखो इसके और इसमें देयर इज सिंपल जस्ट स्ट्रक्चरल चेंजेस। यहाँ पे स्पर्मेटेट्स आर राउंडेड इन स्ट्रक्चर एंड स्पर्म्स आर लिटिल elongated इन स्ट्रक्चर, दैट्स इट। टेल है यहाँ पे नहीं, बस यहाँ पे टेल बन रही है। ठीक है, डन। मेक दैट जल्दी जल्दी। अब वन टाइम में दिस 120 million ऑफ स्पर्म्स व्हिच इन सिंगल डिफॉर्मिंग, अब ये हो गए, तो वहां पे जो आपका टाइप है फिर से सारा प्रोसेस दोबारा रिपीट करें। समझ आ रहा है? सपोज अगर 10,000 स्पर्मेटोगोनिया है तो 40,000 स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, एक से चार बन रहा है। देखो ये भी अगर ले लो, एक से दो और इसी दो से फिर दो और, इससे एक फिर से दो और, है ना, अगर आप बनाएंगे तो दो और, तो एक से दैट मीन्स फोर। ओके, चलो मेक द हेडिंग oogenesis, मेक द हेडिंग oogenesis। Sorry. oogenesis लिख लियो, दैट्स डिफरेंट। चलो राइट साइट, सिंपल पहले लिख लो। oogenesis is a process of maturation, oogenesis is a process of maturation of of reproductive cells, of reproductive cells in ovary, in ovary, site, site, बहुत अच्छा, CYTE, पेन गिर गया कहीं पे, जस्ट मिनट। If you're asking something, ask me. Tell me, Shriram. Again, cell is site or over site or site. This side is place. yes, COET is no. This is related with cell.
from cells of ovary, full stop, full stop. I don't know. It involves the formation of haploid gametes. It involves the formation of haploid female gametes called ova, called ova. मैम एक बार रिपीट कर देना, इट इन्वॉल्व्स है। Involves the formation of haploid gamete called ova from the diploid egg mother cells, अच्छा इसमें भी sperm mother cells होती है ना, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो sperm mother cells, ठीक है, egg mother cells, comma oogonia, oogonia of ovary of female organism, लिख सकते हो? Okay, then I'll leave. You can write about the polar bodies. You have the concept of the polar bodies. Because as the number of its sperms are formed millions in number, ova doesn't form millions in number. And it stopped at that fetus. ये fetus में complete हो रहा है. Ova fetus में complete नहीं होता है. वो puberty के time पे pause होता है. लिख सकते हैं? चलो, write down. Oogonia of ovary of female organism. It involves two biological processes. Oogonia of ovary of female organism. Full stop. It involves two biological processes. Dash genetical programming and packaging. नीचे लिखो ऐसे, इसमें लिखो साइट, वो कहाँ था? टेस्टिस में, है ना? ये क्या होता है? ओवरी में, ठीक है? जब हम लोग whenever we see like this structure, है ना, जब फीमेल का हम लोग ये वाला पोर्शन देखते हैं तो दैट इज ओवरी, यहाँ से ओवा बन के आता है and here it get fertile. This is a uterus or the something, this is vaginal opening, and यहाँ पे फिर fertilize होके यहाँ पे फिर womb में ये बनता है, but ओवर रिलीज कहाँ से हो रहा है? दैट इज अ ओवरी, ठीक है? Site is ovary. Next period हेडिंग डालो, जैसे यहाँ पे साइड डाला, अभी डालो पीरियड, PERIOD, पीरियड, इसमें लिखो the period of oogenesis is different. The period of oogenesis is different or vary in different mammals. Full stop. In human female, there are around, underline करो, 1700 प्राइमरी या प्राइमोडियल जर्म सेल्स. वही स्टार्ट पे आ गए हम लोग, है ना? जाइगोट पे आ गए वापस दोबारा. प्राइमोडियल जर्म सेल्स in undifferentiated female gonad at 1 month of fetal development. पीरियड के अंदर ही थोड़ा सा लिखो ड्यूरेशन 7th week of pregnancy, so of embryo, 7th week of embryo, not pregnancy, 7th week of embryo, डैश करके लिखो प्राइमोडियल जर्म सेल्स से लिखो ड्यूरेशन में.
ठीक है, नेक्स्ट लिखो, थर्ड मंथ ऑफ फीटस, थर्ड मंथ ऑफ फीटस, oogonia, oogonia. That is why शिवानी यहाँ पे अमीनो सिंथेसिस थर्ड मंथ की बात करते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ, की कोई अबनॉर्मेलिटी या कुछ ऐसा तो नहीं है, कंप्लीट 46 बन रहा है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। इसमें लिखो ओके मैम। कॉमा 2 मिलियन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसी में लिखो कॉमा 2 मिलियन प्राइमरी oocyte, नॉट 2 मिलियन प्राइमरी oocyte, ठीक है। मैं लिखो सेवेंथ मंथ ऑफ फीटस, 7 month of fetus, primary oocyte, 7th month of fetus, primary oocyte plus primary follicles plus primary follicles, इसी में नीचे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एट बर्थ, इसमें नीचे पॉइंट चेंज कर, एट बर्थ प्राइमरी oocyte with prophase of first meiotic division, prophase of first meiotic division. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अभी कितने थे आपके, मिलियंस हो गए थे, 2 मिलियन प्राइमरी oocyte है ना, अब देखना ये रिड्यूस होते जा रहा है, ठीक है। देखो 40,000 प्राइमरी oocyte, 40,000 प्राइमरी oocyte in adult ovary, next 500 primary oocyte attain maturity, ठीक है, मतलब ये नंबर एग्जैक्ट कट टू कट नहीं है बट रिलेटेबल है, ठीक है। नेक्स्ट नॉर्मल पॉइंट लिखो, समझ आ रहा है, ये पूरा प्रोसेस जैसे कि फीटस में वहां कंप्लीट हो रहा था, यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो, चलो पहले लिख लो, इसमें नेक्स्ट लिखो, around 1700 primordial germ cells, around 1700 primordial germ cells in undifferentiated female gonad at 1 month of fetus develop, at 1 month of fetus develop, full stop. These proliferate to form around 60,000 oogonia. 1700 से कितना हो रहा है गाइस, 60,000, कौन सी स्टेज, मल्टीप्लिकेशन स्टेज, जैसे कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 स्टेज लिखी है, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैचुरेशन, सेम स्टेज यहाँ पे भी है, तो 1700 से 60,000 बन रहे हैं, कौन सी स्टेज, मल्टीप्लाई कर रही है, ठीक है, राइट ऑन, इनटू oogonia, यस 60,000 oogonia, इसमें नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बंद करना है श्री रमेश जी, 60,000 actually 6 Ma'am, what was the term after this? 6 lakh oogonia, 6 lakh oogonia at 2 months of gestation period, 6 Ma'am? lakh of, yes बच्चा, Ma'am, what was the term after this, before around 60,000 oogonia?
6 लाख oogonia, 6 लाख मैम नहीं, आपने एक टर्म बोला था ना प्रो करके। proliferate, अच्छा proliferate है ना, proliferation मतलब increasing in the number, proliferate to form around 6 lakh oogonia at 2 months, at 2 months of gestation period or embryo, at 2 months of gestation period, and by its 5th month, and by its 5th month, the ovaries contain around 7 million oogonia. The ovaries contain around 7 million oogonia. 7 million oogonia. Full stop. ठीक है, मतलब 5th मंथ तक फीटस में या एम्ब्रियो में स्टार्ट कहां से हुआ था? 17,000 से। कितना हुआ? 6 लाख हुआ। उसके बाद 7 मिलियन मतलब होता है 70 लाख। हाँ, 7 मतलब 70 लाख। 6 लाख से कितना पहुंच गया? 70 लाख। क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, कंटिन्यूसली दे आर मल्टीप्लाई। ठीक है, सो विच स्टेज इज द मल्टीप्लीकेशन स्टेज? किस मंथ तक? 5th मंथ। ठीक है, दे आर कंटिन्यूसली जस्ट मल्टीप्लाइंग। ओके, चलो नेक्स्ट है ऑन। However, many oogonia undergo atresia. Underline this. Atresia. ब्रैकेट में लिखो, degeneration of germ cells. Degeneration of germ cells before the birth of female. Before the birth of female, as at the time of the birth, as at the time of the birth, only 2 millions, only 2 millions of 2 millions of primary follicles remain. Primary follicles remain. More than 50%, more than 50% become undergo in atresia. Undergo atresia. ठीक है, that is degeneration. ठीक है, समझ आ गया? कम हो जाती है, इंक्रीज नहीं होती, अनलाइक द मेल। कंटिन्यूसली डिवीजन में नहीं जा रही। आई विल शो यू हाउ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। atresia continue till the time of puberty, till the time of puberty of each ovary, and contains only 60,000 to 80,000 60,000 to 80,000 of primary follicles at puberty. देखो, 5th मंथ ऑफ एम्ब्रियो कितना हुआ? पहले कितना था? 1700 क्या था आपका? प्राइमोडियल जर्म सेल्स। उसमें डिवाइड हुआ, 7 मिलियन बना। ठीक है, 5th मंथ पहले आपका बना 2 मिलियन। ठीक है, 2 मिलियन से फिर कितना बना? 7 मिलियन। अभी मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। ठीक है, 5th मंथ ऑफ एम्ब्रियो में कितना था आपका? 7 मिलियन।
फिर क्या हुआ, 5th मंथ से कौन सा मंथ हो गया, 9th मंथ, बर्थ कब हो रहा है 9th मंथ में, है ना। 9th मंथ में अब कौन सा प्रोसेस आया, अट्रेशिया, कितना बचा 2 मिलियन ओनली, डिक्रीज हो रहा है ना, 7 मिलियन से 2 मिलियन इज डिक्रीजिंग, एंड दैट डिक्रीजिंग और द डीजनरेशन इज कॉल्ड द अट्रेशिया। फर्स्ट जब फीमेल बेबी बॉर्न हुई तो कितने हैं 2 मिलियन, प्यूबर्टी की एज अराउंड 14 इयर्स ऑफ एज, है ना। तो अभी 2 मिलियन से अभी कितने बच रहे हैं, ओनली 60,000 to 80,000. It is continuously decreasing. Why? Simple process. Why? Because unlike the Reduction sperm, division. reduction नहीं होता बच्चों, इसमें भी होता growth period, because nature is like that only, है ना। Sperm is motile, है ना. During the fertilization of most of the animal, we have seen the sperm moves to the female body or the female gamete. So they have to motile, they have to small. So when we are going to talk about the fertilization, suppose that this is a sperm body, okay, and this is ova. Ova is bigger in shape. Why? Because during the fertilization, this is process, this structure, the head or that conical shape, that is called the acrosome. That is called the acrosome. This is just for that making the hole or the dissolution of that layer. उसके बाद ये भी हट गया. Tail is for that passage. Suppose that from that vaginal entry, है ना, ये सारा process में move करने के लिए that tail not required. When there is actually fusion or the fertilization process occurs, only this nucleus undergo. Only. Otherwise बाकी सारा part क्या होता है, remain बाहर हो जाता है. ठीक है, अंदर नहीं जाता. After that, इसका nucleus, that male nucleus, and इसका female nucleus getting fertilized. Male से क्या आ रहा है? Only nucleus, that छोटू सा part, that means only DNA. Other than that, nothing is coming. That is why after the formation of spermatid, the sperm getting modified to form spermatozoa, because उसका requirement नहीं है, ठीक है. But when we are going to form that ova do not go any modification, right? Cells are generally this structure through this structure. There's a process called spermatogenesis. But from here to here, there is no modification. Okay? That means when we have just make that tabular form, we have talked about that कि nucleus modify हो रहा है, mitochondria modify हो रहा है, Golgi apparatus modify हो रहा है, this and that central modify. इसमें कोई modification नहीं है. That means every single part of that ova is important. Mitochondria is important, right? Golgi bodies are important. After the fertilization process, whatever the next formation of the zygote is occurring, उसका न्यूट्रिशन कहाँ से आ रहा है? ओवा से आ रहा है. स्पर्म से तो आ नहीं रहा. स्पर्म तो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट इज थ्रू द फॉर्म ऑफ डीएनए, राइट प्रणव? न्यूक्लियस में देयर इज ओनली डीएनए. माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म से आ रहा है? नहीं. गोल्जी बॉडी स्पर्म से आ रही है? नहीं. माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल, इन सबका एक फंक्शन है. माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइडिंग दैट एडीपी, गोल्जी बॉडी इज इन्वॉल्विंग इन द प्रोटीन फॉर्मेशन. सो दैट फ्यूजन के बाद जब जाइगोट बन रहा है, उसमें मेनली इन्वॉल्वमेंट, मेन पोर्शन किसका है? फीमेल का, है ना. मेल का सिर्फ पोर्शन इंफॉर्मेशन का है, दैट इज डीएनए, दैट्स इट. इसीलिए आप लोगों के प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन आया था, एक बार क्या 2 बार आ चुका है, दिस इज 2 टाइम क्वेश्चन. माइटोकॉन्ड्रियल, अब सपोज दैट जाइगोट में और बेटर से नेक्स्ट बेबी में, फर्टिलाइजेशन के बाद जो बेबी है उसमें अगर किसी माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, राइट? सपोज दैट इस जाइगोट में द न्यू बेबी हैव नॉट फंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया, वो किधर से आएगा? मदर से और फादर से? मदर से, प्रणव, है ना, ऑनलाइन. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट इज. सोचो, ये क्वेश्चन वो प्रीलिम्स में उठा के दे रहे हैं. द टर्मिनोलॉजी इज माइटोकॉन्ड्रियल inheritance. That is your question. Mitochondrial inheritance is coming, ये आप लोगों का स्टेटमेंट, आप लोगों का क्वेश्चन आगे देखना, is coming from the father or mother. So it's only mother, yes it's only mother, क्योंकि स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर आ गई है और वो बाहर हट जाएगी. Yes,
एग्जैक्टली, एक्सेप्ट द न्यूक्लियस देयर इज नथिंग एंटरिंग. एक सेल में सपोज दैट इफ वी टॉक अबाउट द नॉर्मल सेल, एक नॉर्मल सेल में देयर इज न्यूक्लियस, देयर इज माइटोकॉन्ड्रिया, देयर इज ER, देयर इज गोल्जी बॉडीज, देयर इज लाइसोसोम. यहां से तो सिर्फ न्यूक्लियस आया, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस. बाकी इस सेल का जो स्ट्रक्चर था, ये स्पर्मेटेड था, ये जो फॉर्म हो गया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे आ गया, गोल्जी बॉडीज आ गया, टेल बन गया, साइटोप्लाज्म बन गया, इसका सिर्फ ये जा रहा. ठीक है, दैट इज योर प्रीलिम्स क्वेश्चन, 2 टाइम्स आ चुका. गॉट इट? पक्का? राइट. हाँ सर, ये तो बताए नहीं. देखो, तो नेचर व्हेन, अभी जैसे कि हम लोग ने अभी वहां पे क्या देखा था, गाइस हियर व्हाट वी हैव सीन. अच्छा बच्चा एक मिनट देखिए, जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमने एक सेल से अल्टीमेटली कितने सेल बना रहे हैं हम? 4. कोई जरूरत ही नहीं है, कुछ फंक्शन ही नहीं है, बना लो कितनी बना सकते हो. बट जब हम लोग व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द oogenesis, अच्छा इसमें इस सेल में और इस सेल में कोई डिफरेंस है? नहीं, द सेम आर दिस. बट इन दैट प्रोसेस मियोटिक डिवीजन. ठीक है, अब देखो, अगर जब हम लोग oogenesis करेंगे तो यहीं पे ये भी सेम रखेंगे, पीजी सेल्स. ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया की जगह हम क्या कर देंगे? oogonia. ठीक है, oogonia विल अंडरगो टू दैट प्राइमरी oocytes, है ना? बस सेम चल रहा है आपका मल्टीप्लिकेशन फेज. ठीक है, प्राइमरी oocyte. ठीक है, प्राइमरी oocyte से हम बनाएंगे सेकेंडरी oocyte. अच्छा यहाँ पे देखो, सेकेंडरी oocyte से हम लोग फाइनली बनाएंगे ओवा. तो यहाँ पे इज देयर एनी डिफरेंस इन दिस सेल एंड दिस सेल? नो, बोथ आर द सेम, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन टाइप. बट व्हेन वी आर गोइंग टू फॉर्म, यहाँ पे जब फाइनल आप बनाओगे तो एक बड़ा बनाते हो और एक छोटा सा. यहाँ पे सपोज दैट 2n है और यहाँ पे भी n हो रहा है, जैसे यहाँ पे 2n से nn जो रहा है ना, ये भी n है और ये भी n है ना? बट बोथ आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर. यहाँ पे भी होगा, ये भी n होगा और ये भी n होगा. इसको बोलते हैं पोलर बॉडीज. ये डिग्रेड हो जाती है, इसका कोई काम नहीं होता, इसीलिए नंबर इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज हो रहे हैं. और ये काम की बनती, ये फिर डिवाइड होती है. देखो ये फिर डिवाइड हो रही है, फिर 2 बना रही है, ये भी डिवाइड होती है. एक बनाती है सब बड़ा सा और एक बनाती है सब छोटा सा. फिर इसको बोलते हैं पोलर बॉडीज. ये डिग्रेड हो जाती है और ये फाइनली. तो हियर फ्रॉम 1 to we are forming 4. Here even not we are forming 1 to 1. We are degrading it, that one polar body. That means to form, during that fertilization, majority of the cytoplasm, majority of the energy, everything is required from the female gamete. अभी तो देखा. तो जब कोई चीज आप बड़ा बनाते हो तो आपको इसमें ज्यादा साइटोप्लाज्म देना पड़ता है. दिस पोलर बॉडी इज फॉर्म वेरी छोटू सा, बट नंबर इक्वलाइज करने के लिए क्रोमोसोम जाता है उसमें, बट उसका कोई रेलेवेंस नहीं होता. जिन्हें पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है वो यहाँ पे भी उनका प्रॉब्लम जाता है कि बोथ आर नॉट फॉर्मिंग एग्जैक्टली, या मल्टीप्लिकेशन का कुछ प्रॉब्लम. ठीक है, इसीलिए फीमेल बॉडी में न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी सिंगल टाइम द प्रॉपर सिग्नलिंग शुड गो दैट वन शुड फॉर्म बिगर ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन. अगर फर्टिलाइजेशन बाय मिस्टेक इससे हो गया तो कुछ भी फॉर्मेशन एज सच हेल्दी एम्ब्रियो नहीं बनेगा. है तो इसके पास भी कंटेंट, बट इसके पास साइटोप्लाज्म नहीं है. ऐसे कंसीडर करो कि मान लो स्पर्म, ठीक है, इससे फर्टिलाइज कर रहा है, कुछ बन पाएगा? कुछ भी नहीं बनेगा. डिग्रेडेड समथिंग तो कुछ बनेगा. वही स्पर्म इससे फर्टिलाइज कर रहा है. न्यूट्रिशन कहां से जाना? दैट स्पर्म इज नॉट गिविंग एनी न्यूट्रिशन, इज इट? नो, न्यूट्रिशन इज गिविंग फ्रॉम द ova. So ova should be bigger and healthy. Got it? Simple. This is it. Ma'am, so it is possible to fertilize with polar body? Yes, it is possible. Even but वो degrade हो जाता है, इतना न्यूट्रिशन ही नहीं रहता, that body degrades. It is possible. पोलर बॉडी जैसे फॉर्म होता है वो अपने आप डिजनरेशन में चला जाता है, कोई रेलेवेंस नहीं है. इट इज पोलर बॉडी इज जस्ट मेंटेनिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट्स इट. अगर नहीं मेंटेन कर पा रहा है तभी टर्नर सिंड्रोम या क्लाइंट-हंटर सिंड्रोम जैसी कंडीशन आ जाती है. ठीक है, यहाँ पे व्हेन वी आर फॉर्मिंग 46 to 23, इसमें दोनों इक्वल जा रहा है, उसमें भी दोनों इक्वल में जाएगा.
बट एक बड़ा बनेगा और एक छोटा। ओके, चलो, थैंक यू। यस, again when we are forming that primary oogonium to secondary oogonium. Yes, when they form they will divide. Pranav, what happened? You are okay, right? Continue, sit down. As the polar body will start forming, it will go at degeneration. As the form, they will degenerate. As the form, they जैसे बनेंगी वो degenerate क्योंकि उनका relevance नहीं. ठीक है? हाँ, further देखो यहाँ पे भी बन रहा है. That's what you're asking. It will go degeneration. Then again here's the forming, it will go under degeneration. This will only continue. That's a follicle cell, and for that so many hormones are responsible. है ना? When we talk about the menstruation, है ना? So this proper ova. So here when we are forming that structure, अब यहाँ पे क्या हुआ है? Suppose that is oocyte, है ना? ऐसे तो बनाते हैं. यहाँ पे आपका oocyte है. यहाँ पे सारा process हो रहा है. Suppose that यहाँ पे these all polar bodies forming and degrading, right? So the complete mature ova is forming here and it is trying to come here. अभी कब होता है? अब यहाँ से if the sperm entry will come, है ना? What is menstruation? अब ये prepare होती है wall, है ना? During that 28 or whatever the period of time, अब ये wall prepare हुई है. If the sperm will come and the sperm will fertilize into that fallopian tube, यहाँ पे fertilize होता है. अगर नहीं होता है, so as the cycle is fixed, ये release होके यहाँ पर आती है और इसके साथ ये shed off हो जाती है. Shed off actually ये layer होती है. ये जो uterus की जैसे कि normal स्टमक की लेयर है, हैंड की लेयर है, ऐसे यूटेरस की भी नॉर्मल लेयर होती है, which prepare every 28 or 24 of days का मंथ कि if the fertilization will occur, ये एग आके ये यहाँ पे स्पर्म आया, इसने फर्टिलाइज किया, अब ये आएगा यहाँ पे आके सेटल हो जाएगा और वो डेवलप करेगा. अगर नहीं सेटल हुआ तो जो मेच्योर लेयर बन रही है, इट इज जस्ट शेड आउट. ठीक है, अदरवाइज इसका कोई रोल नहीं. No, it doesn't have. It's a fixed number. ठीक है, दोनों में in the female and male दोनों में puberty के साथ ही sperm release, sperm और ova formation होते हैं. But in the male it continue throughout the life because it is forming unlimited. Type A is forming unlimited, unlimited. But female जब baby born होती है, उसी समय decide होता है that how many cells is going to be formed, how many times of period is going to be formed. Menopause is already decided actually. है ना? जितने नंबर ऑफ सेल्स है उतनी ही बनेंगी. तभी इन दैट स्पर्म वी हैवंट मेंशन एनी नंबर ऑफ सेल्स. वी जस्ट राइट कि 120 मिलियन पर डे. टाइप ए कंटिन्यूअसली फॉर्मिंग, बट इसमें ऐसा नहीं है. इसमें द फिक्स नंबर इज फॉर्मिंग एंड व्हेन दे आर गेटिंग एग्जॉस्टेड देयर इज अ सिचुएशन ऑफ द मेनोपॉज. अनटिल कि कोई abnormality और सब कुछ ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी बन रही है या बहुत डिले. ओके, थैंक यू गाइस. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am. मुझे लग रहा है प्रणव को समझ नहीं है.